Oh, I think I am muted. Good evening, everybody. Good evening, aspirants. I think everybody's, you can hear my voice. Okay. Okay, so let's wait for a few, like 2-3 minutes. After that, we will start the session. Okay. Yes. So, ଆଜି ଆମେ basically ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଡେମୋ ସେସନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ନୋଟ୍ସ ଦିଟା ଭଲ ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି ଟପର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ୟୁପିଏସସି ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି କୋଉ ଭାବରେ ସେମାନେ ନୋଟ୍ସ ଫର୍ମୁଲେଟ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲେସନ ଅଫ ନୋଟ୍ସ ଟା ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର while we will be starting our lecture ମାନେ ଆମେ next class ରୁ ଆମର full swing ରେ course ଆରମ୍ଭ ହବ and ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ କହିଛି I'll be going I'll try to make you understand as well as I'll go little in the middle pace କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା I walk little speed ତ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଅଟକେଇବେ we will keep revision sessions also like ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଛୁ ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ like you know surprise test ଭଳିଆ ମୁଁ I'll be giving you some questions and relating to whatever we read ଆଉ ଆମେ ତାକୁ revision ବି କରିବା we will keep the session interactive ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବି ସୁବିଧା ହବ ଜାଣିବାକୁ ଯେ whether ଆପଣ କେତେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢଉଛି ଆପଣମାନେ କେତେଟା ସେଟାକୁ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି note factor ଟା is why important because each and every class ରେ କିଛି ନା କିଛି ପଢେଇଲା ବେଳେ example ହିସାବରେ କି କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆମେ enroll କରୁ
So that is why notes are very important, and ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦିଟା format of notes, ସେ ଦିଟା style of note making ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ kind of systematize way ରେ ଗୋଟେ notes लिखिଛନ୍ତି। ma'am, this is sociology optional class. Yes, this is sociology optional class. Yeah, we are going for a demo. I mean, these are the demo sessions going on. After that, I may full-fledged way रे हमें course completion करिबा। So yes, जोटा मु कहूथि मु दीटा type of notes आपनको देखिएबी। गोटे आपण देखिबे bullet pointical notes, जोटा कि आपण माने आपण धरने जेमते मु कहली commercial revolution, scientific revolution, जो आपनको जेतले मु overview दोउथली पेपर मानकर मु ऑलरेडी सबु पेपर रो किछि न सबु क्रक्स गोटे समराइज वे रे मु कहिछि। आमे डिटेल्ड स्टडी तो करिनु, किंतु मु तारो ओवरऑल यूनिट्स रो सबु रो क्रक्स मु कहिछि। तो सेते बेले जो पॉइंट्स गुला मु कहिछि, I will reflect जे केमती भाबरे जो each and every point I was reflecting, I was trying to say in the overview, सेटा को भाबरे टॉपर्स नोट रे जो माने यूपीएससी क्रैक करचंती, सिविल सर्विसेज क्रैक करचंती, तांको नोट्स रे वी विल सी केमती भाबरे से लिखिचंती। जणे लिखिचंती बुलेट पॉइंटिकल्स वे रे, माने गोटे लाइन रे से माने तांको नोट मेकिंग करचंती इन ऑर्डर टू फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। आउ जणे जणे को करचंती ना मेन जो समराइजेशन ऑफ द एंटायर सिलेबस, लाइक फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिवोल्यूशन की हमें कमर्शियल रिवोल्यूशन को छोड़ के हमर प्रथम यूनिट रे हमें पढिबु। बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन केमती भाबरे रिवोल्यूशन क्रिएट हेथिला आस्थिला, माने रोमन एम्पायरशिप केमती डाउनफॉल हैला, एंड देन हमें फाइनली वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो माने हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्निटी एंट्री करूची, सेटा हमें जो देखुछु सेई टाइम में बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कमर्शियल एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन आस्थिला। नाउ सेटा रो किछिटा समराइजेशन पॉइंट है, माने जेतले मु कहूची रिवोल्यूशन आस्थिला, द क्वेश्चन इज कोनटा रिवोल्यूशन आस्थिला। तो कोनटा रिवोल्यूशन आसीबा क्वेश्चन टाकू सेटा बहुत ब्यूटीफुली से कोन करछंती ना से लिखि दैछन, जेमति कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल हैला। सो टुडे व्हाट वी विल डू इज the session, I won't stretch this the session very long, but I would request, I will I will show you how to make your notes, जेमति कि by आमे क्लास करू करू हमरो नोट मेकिंग भी संगे संगे होथिबो, so that when you finally have a copy where you will start writing your question answers, even हम question paper भी अपन को देखे कि मु डिस्कस करिबि जे केमति भाबरे आंसर टा हम लिखुछु। तो सेटा हेले कोन हबो ना, आपण जेतेबेले मु फुल्ली क्लास गुला को आरंभ करबी आउ आपन को प्रॉब्लम हबा उचित नुहे इन मेकिंग नोट्स, कारण जेते क्लियरली आपण आपनकर अंडरस्टैंडिंग टा को नोट फॉर्मेट रे आपनकर कॉपीज रे लिखिबे, आपन को सेते इजी हबो आंसर शीट रे आपन को कन्वर्ट करिए को आपनकर अंडरस्टैंडिंग टा। ओके, सो आई बिलीव जेते जण जॉइन करबा त और एल्स फॉलोड बाय जेतेबेले आसीबे हमें जॉइन करेबा समस्तन को। So yes, let's get started. Let me share my screen to you. And it's a request from for everybody. मु जेते बेले माने कोआडे किछि जोरे जाउची कि किछि गोटा आपण बुझी परनांती, you have all the rights to stop me and ask me question जे मैडम आपण एटा को कहिले मु बुझी परली कि व्हाटएवर, कारण माने बेले बेले कोन होय ना मु स्पीड रे हुए तो पळै पारे, आपण जैसे न धरि परिचंती कि मु जानि पानी जे आपण गोटे पॉइंट कोठी बुझी परनांती, मते प्लीज आपण स्टॉप करिबे एंड आस्क मी टू रिपीट, आई विल डेफिनेटली रिपीट। ओके, सो लेट मी शेयर। ओके, so we have already gone for the overview of the syllabus. I don't think आउ काहाकू syllabus टा को understand करिबारे किछि problem हेतिबो, जोटा मु कहिली एई दीटा जाको paper 1 और paper 2 रे there are certain units which matters a lot, which are very important, जहां मध्य रे कि लास्ट आडवा किछिटा जो यूनिट हम देखुछु सेटा एक्चुअली आसी जाउची, बट
it's still separately এটা ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ majority ଆପଣଙ୍କର there are ସବୁ paper ରେ ଦିଟା ଯାକ paper ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ important units ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ focus ଦବା ଯାହାଠୁ କି question ଆମେ dominatedly ପାଉ. Now before going to the toppers note and all, I would like to show you again the proper question paper that ei ବର୍ଷର जो question paper ଟା ପଡିଥିଲା paper 1 ର ଏଟା paper 1 ଅଛି section A B କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ so that paper ଟା ଆପଣ ଥରେ study करले ଆପଣ ହିଁ ମତେ question ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ how to formulate this answer or that answer. आगे भी ଆପଣଙ୍କୁ এই question paper ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି but पूरा ଦେଖେଇ नथिली. So kindly see the question paper and then we will finally go to the toppers note. So that is how you will understand how to write your answer. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର unit 1 रो focused question सेटा होची sociology is a science. This is one focused question ଆମର ଆସିଛି. Try to always observe and mark the units. को unit to कौन पड़ुची. Then ଆମର unit 4 रे ता माने आमे देखुछु theorist टू question पड़ुची 101% गोटे दिता and first unit is a important unit. Then एठी dominatedly research unit to question पड़ुची hypothesis and observation. I might be missing out on people joining. Yes. Observation to question पड़ची ता माने हमरो unit एटा कोथरे जाउची. This is the unit 3 and unit 2 3 रो हमरो question पड़ुची which is again important points. आपण मु सेति पे आपण कोची constantly observe the units. एकाठी हमें चलंतु units गुडा को observe करबा को गुडा हमरो important units रहुची. तापरे हमरो एपोटे पैटर्न वेरिएबल ऊपर पड़ची. पैटर्न वेरिएबल मु आपन को जते बडे मु ओवरव्यू देउथली सेतेले मु बुझेइथिली पैटर्न वेरिएबल कम्स अंडर हमरो टैलकट पर्सन. दैट मींस थ्योरी रो माने फ्रॉम द थियोरिस्ट द क्लासिकल थिंकर्स पायनियर्स मानको ठारो आपण देखि परछन्ते केमति भाबरे क्वेश्चन टा दीटा खंडे क्वेश्चन वी कैन ऑब्जर्व very well. Ella. And when it comes to research also we can easily see. Then again comes Max Weber means theory. Theorist mane classical thinkers mane are quite a dominant in nature. Ame ja dekhi parchu. Then what is the concept? This what is the concept and how does it relate to theory? This particular thing comes under again your research topic. Research topic when I say I mean it is under scientific study and ये माने unit 2 3 ए ना जाके हमें कौन देखु छु पेपर रे we can see unit 1 2 3 जाके चाली छि ए ना जाके ओके मु सेति पे आपन को जते बेले मु पढौथिली जो बुझौथिली सेकंड पेपर टा मु आपन को सेति पे किछटा जिंस सेते बेले कहिथिली आपन जे नोट करथिबे बुझी पाथिबे. Let's observe it once and then we'll go ahead. Please kindly I will expect everybody जेहेतु एई वर्षर पेपर सिस्टम माने हमरो स्टाइल टा नुआ आछि सेति पे मु आपन को रिक्वेस्ट करबी जे आपन काइंडली नोट करंतु मु जहा जहा एटी कहि जाउची जे को यूनिट टा हमें डोमिनेटेडली पेपर्स गुला रे देखि परछु सेइटा को आपन प्लीज नोट करि चलंतु हला. देखंतु again question number 9. Question number 9 is a dominant question of what? It's a dominant question of again this unit 3. Hopefully समस्त जानी परछो मु कोन कहूची हला. It's very important before you start जे को यूनिट को हमकु हायर इंपोर्टेंस देबार अछि और को यूनिट टा is every unit is important but certain questions are always under your palms हला. तापरे होची हमर एठी आसिला now gender and social stratification. This is from the unit amaro last add को सेटा पढुची. Social stratification तो अच्छी but it's not about just this, it's a mix. ame dekhuchu it is basically 12 unit 12 gender ru gote question ame dekhuchu. मु मझिरे मझिरे टिके डिस्टर्ब करछि because पिला मन को ऐड करिया को पडुची, so kindly pardon with me. Okay, so amaro we can see the other question.
Hela? Now magic. What is magic? And social functions. Magic ta again mu apanku kahi dochi jetale we study social chain, social function eguda jetale ame padhuchu ei ya bhitare bahut guda theories na lekha heini kintu ame padhila bele we will have to go through certain mane theories jo mane ki emane achandi yanku chhadi ki bhi kisi theories amku jibaku padiba. Now when it comes to magic we can see a lot of questions from that means ଆମର ଡମିନେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏନା ଯାକେ ଦେଖିଲେଣି ଏଇନା ଯାକେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପରରେ ଦିସ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇଜ अगेन अ थियोरिस्ट क्वेश्चन पेपर सोशल फंक्शन एंड डिसफंक्शन रो जोटा मैनिफेस्ट फंक्शन लैटिन फंक्शन जो हमर आरके मर्टन करो सेटा रही एटा दिस इज 1 देन 2 देन 3 and one more was also there Talcott person karo 8 4 आमे ऑलरेडी 12टा क्वेश्चन भितर आमे ऑलरेडी 4टा क्वेश्चन आमे पाई सालुनी व्हिच इज डोमिनेटेडली काहाकू ना पायनियर ऊपर देन व्हेन इट कम्स टू रिसर्च ऊपर आई मीन टेक्निक्स एंड साइंस साइंटिफिक जोटा हमर कोची जोटा हम रिसर्च माने आपण जानिबे आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली यूनिट 3 and 2 okay these are the methods used in research and these are the way the research is designed and how to study a particular phenomena ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ 3 କୁ यूनिट 2 और 3 रे you can mark again a question of 1 this is the technique it is basically how to collect data these are certain quantitative achi qualitative achi these are qualitative technique of collecting data so सेटा हम पढिबा सेटा कोन this is 1 2 then we have 3 3 questions ता माने 12 रू ऊपर सेक्शन रो 12 टारू we are getting 4 questions from our pioneers and we have got some more questions that is the three questions from your technique I mean basically research oriented questions तो ता माने हमें एटी केते 4 plus 4 5 6 7 question out of 12 dominated by these particular units so this of course becomes very important irrespective of jaha bhi apanko ek question thora apanku face kareyku padibo apanku au gote mu dekhi douchi ya previous year question paper apan dekhantu eithi bhi eta hochi apanko old system re eta hela eta tar ago ka system hisab re ei barsar nuho ta pacha barsar आपण सेतरे भी मार्क करि परिबे एठी आपण को स्केल पचरा है दैट इज अगेन अ रिसर्च क्वेश्चन माने यूनिट 3 एंड 4 रो 2 एंड 3 रो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी सी यस 2 एंड 3 रो क्वेश्चन एटा आपण देखंतु सोशल डिस्टेंस हमर स्केल दिस इज वन ऑफ द ये हमर रिसर्च क्वेश्चन then elements of scientific method is a again research oriented question anomy आउ एटा होचे एटा एनोमीटा होचे हमर बेसिकली जो थ्योरी पार्ट अछि एटा तो एथरो आपण डोमिनेटेडली एतिको एटलीस्ट बुझंतु बाय द क्वेश्चन देयर आर सर्टेन वेरी एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट हमर यूनिट्स जोगुला की आपण को पाई मार्क फेचिंग हबो हैना एंड there are units which you will of course study and make questions but we have to see kaha ଆମର पैटर्न ऑफ स्टडी एतबेले हमर सिविल सर्विसेज रे कि काहा को बेसी प्रायोरिटाइज करी कि क्वेश्चन दिया जाउची बिकॉज़ you are here to crack the examination so we also need to understand जे को यूनिट्स गुलो को we need to complete and gulp down first हैला तबे सेक्शन बी रे हमें एठी आसीबो सेक्शन बी रे what we see marriage as an institution is the most favorite questions marriage as an institution विषय रे पचाची तापर फैमिली सिस्टम केमती भाबरे हमें जानि छु डैमेज होची ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज आर ग्रोइंग इवन ब्रोकन फैमिलीज आर ग्रोइंग वी विल क्रिटिकली एनालाइज दैट एक्सप्लेन द क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया एटा होची माने कौन फैक्टर्स लाइक इज वेस्टर्नाइजेशन अफेक्टिंग इज मॉडर्नाइजेशन अफेक्टिंग is McDonaldization affecting the family system what is the family system of India. So that is what becomes one of the important questions. Okay. So it comes under
Unit 5 section B re ame dekhuchu Unit 5 ru या finding question. Even social control is one of the questions we found upar adua. There's one question from education. So you can see a mixture of question, but dominatedly 80 dekhantu iti au gote Karl Marx kara question, social mobility. So now you basically know what are the dominant places or dominant units जोगुड़ा कि आपण को पेपर 1 टा ही हमें ना डिस्कस करछु. तो पेपर 1 हिसाब रे you need to understand कोथुरु larger amount of question आसुची. सेटा हमरो सदा बेले एटा होची मो आपको काइंड ऑफ गोटे कहि परंती ट्रिक्स and tactics coachy they admit all. Sorry, I could not see admit. Yeah, এটা আপনি কহি পারন্তু. This is a kind of a tricks I am showing you যে কোনটা how to organize in order madam to এটা example type ta আজ্ঞা এটা example ভଳିয়া ta हाँ हाँ माने मु आपन को एग्जाम्पलेट करूची. देखंतु एटा होची ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एथर कर मु आपन को एग्जाम्पल बाबद को जे को यूनिट गुला आपन को माने सबुटु बेसी फोकस रे आनिया कहबो. देखंतु आमे तळे कोन से परीक्षा दो सेगुडा रे किछिटा एका यूनिट थाए जोगुडारू बहुत बेसी क्वेश्चन पड़ेनी, डोमिनेटेडली पड़ेनी. पुणी किछिटा एमती का यूनिट थाए जोथरे कि सदा बेले आपण मेजॉरिटी क्वेश्चन पाई परिबे. तो आमर टार्गेट टा कोन? आमर टार्गेट होची स्ट्रांग प्रिपरेशन आमे सब करिबा, किंतु ता भितर स्ट्रांगेस्ट प्रिपरेशन किछिटा रहइबो जोटा कि आमे इमिडिएटली मेजॉरिटी क्वेश्चन जोटा पढिबो ताको आमे हिट करि परिबो. सो सेति पे मु एटी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपन को बेसिकली दोचो एग्जांपल दोची. तापर मु आपन को देखिबी केमती भाबरे आमे नोट्स बेसिकली फॉर्मुलेट करिवो. नोट्स ता आपन को भाबरे आपन निजरो नोट्स ता को लिखिबे ताहले आपन को सेटा सुविधा हो. सेति पे मु टॉपर्स मानन को नोट्स आनिची so that you see it कारण हमरो रूल होची माने आई एम सेइंग द बेसिक रूल. Stop presenting. Yeah, what I want to say is that जोटा हमरो basic rule before any examination is, and it is also my duty आपन को जणैबा जे जेतेबेले हमें गोटे एग्जामिनेशन को हमें गोटे प्रिपरेशन को एंटर करछु फॉर अ पर्पस. यू ऑल आर एस्पिरेंट्स ओवर हियर जो माने कि ऑफ कोर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करिया पे जोर सोरे लागी पड़छ. तो सेति पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मु चाहेनी मु चाहूची आपनकर जेतिको टाइम आपण मे बी पाठ पढैला बेले you will be realizing जे अरे एटा टी करले ही थांता सेटा करले ही थांता ओहो मु ऑलरेडी यूनिट टाको ए भाबरे अनऑर्गेनाइज्ड वे रे लिखि देची एना मु कोन करबी. बिकॉज़ एवरी एग्जाम को क्रैक करिया को द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड विथ योर पेपर्स. You have to be very you have to have a very good analysis of previous year question paper. And unfortunately amar to बहुत गुड़ा question paper एना नहीं कारण last time ए जो 8 वर्ष जो परीक्षाटा हैला सेतरु चेंज हेची. तो सेति पई ही मु आपन को गोटे कंक्रीट एनालिसिस देखौची जे केमती भाबरे यू शुड स्टडी एंड व्हाट आर ऑल द इंपोर्टेंट यूनिट्स बेसिकली. कारण हमरो 10टा यूनिट अछि. 10टा आमे सेमेस्टर पढला बेले भी आपण निजे मार्क करथिबे 10 यूनिट्स थाए कि जहां भी जत्ते को यूनिट अछि ता भितरु फोकस यूनिट किछटा थाए जोटा कि माने यू कैन से सिविल सर्विस एग्जामिनर्स करो फेवरेट पोर्शन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आउ बीट एनी यूपीएससी हो ओपीएससी हो तांकर गोटे गोटे पोर्शन थाए जिससे से माने सेही पर्टिकुलर सेक्शन रो सेही पर्टिकुलर यूनिट रो डोमिनेटली क्वेश्चंस पचरन. तो जेते बेला आपण प्रिपरेशन करूचंती यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड एंड नो जे को यूनिट को आपण को एकदम पॉलिश्ड वे रे बुझिबार भी अछि, पॉलिश्ड वे रे आपण को लिखिबार भी अछि. सो दैट या सेटा कोठु आसीबो सेटा होची ओनली इफ यू एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर. तो सेति पे बिफोर स्टार्टिंग कारण या परे मु स्टार्ट करि नेला परे आई विल नो मोर गिव यू द एक्सप्लेनेशन of why am I teaching it in this way or why am I teaching it in that way. सेतरे मु काली इवन हमरो सृष्टि देशमुख कर इवन देखैली भी आंसर शीट भी देखैली तांकर केमती भाबरे से आंसर लिखिथिले in order to make you understand जे how to even formulate the answer कोनटा को ये एटा मु आपन को this is my final briefing and final demo class in order to make you understand how the course work, how the optional paper will be आमे आगु को आमे केमती भाबरे बढ़िबा. एंड जोटा मु कहली मु वीकली आपनकर को भाबरे
गोटे वीक रे जहाँ पढ़ू ताको को भाबरे में रिवाइज करबा सो दैट क्लास रे आपण अटेंड करबा सहित ही आपण को रिवीजन शुड बी ऑलमोस्ट डन आपण जले निजे पढ़िबे इट शुड बी ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड रिवीजन हैला तो यस लेट्स अगेन चेक इन मु सेति पे आज क्लास आई विल नॉट बी टेकिंग अ वेरी लॉन्ग क्लास because I want you all to get mentally prepared and keep your copies ready कारण मु टिके राइटिंग बहुत करे तो सेति पे there will be a lot of writing in my class तो सेति पे आपण भी ready हे जानतु in order to you know start writing things तो प्लीज आपण समस्ते निजरो निजरो गोटे सेपरेट ऑप्शनल कॉपी स्पेशली मोर लेक्चर नोट्स पे रखिबे यू विल बी गेटिंग recordings and everything but it is always important to make your own notes while I am saying something okay ठीक अछि now we will head on to notes जमु काली टिके आपण को एमदी खाली ओवरली देखैथली देखंतु यूनिट 1 ता हमें जोटा अछि हमरो यूनिट 1 सेतिरे here is the impact of industrial revolution and French revolution मु आगे भी कहिछि जेदी काहे कि आम पई as a sociologist it becomes very important to understand that how sociology as a subject has emerged okay तो what made emerge तो कला बहुत लेट रे सेटा आसिला almost like the last subject on earth भले आसिला किंतु it has become the mother of all sciences तो what made it so important सेटा जानिया को हेला हमकु सेति पई हम सब्जेक्ट आई मीन सोशियोलॉजी रे हम पई इंपोर्टेंट ही जानिबा जे द बैकग्राउंड स्टडी ऑफ इट तो देखो एटा गोटे यूपीएससी एस्पिरेंट करो नोट्स एटा मु कलेक्ट करछि आई थिंक इट इज नेहा यस नेहा भोसल रो भोसले रो एटा हमर बेसिकली नोट्स तो एटा रे आपण देखि परिबे सीएडी लिखि छै आज्ञा मैम इट विजिबल नहीं मैम इट्स नॉट विजिबल नो मैम is the problem faced by everybody no ma'am okay No, ma'am, it's visible. होनथिला सुबेंदु तमे कहिलो कि यस मैम अच्छा शुभेंदु डू वन थिंग तमे गोटे काम करो तमे लॉग आउट करिकि पुनी लॉग इन आई मीन अच्छा माने ये कॉल Yes, ऑफ ma'am. करिकि पुनी एंटर करो मते लागुची किछि गोटे टेक्निकल एरर हेछि यस पिन द स्क्रीन ओके की गोटे कहिला पिन द स्क्रीन हाउ डू आई पिन द स्क्रीन पिन द स्क्रीन कुलदीप कहउचंती पिन द स्क्रीन how do I pin the screen I have no clue oh Subhendu pin the screen okay fine okay Shubhendu bodhe jaichanti se asantu se I think ha he joined back Shubhendu is everything visible to you right now screen is not visible जो मन को screen visible होनी प्लीज आपण गोटे काम करंतु कारण मोर एपट इंटरनेट कनेक्शन टू नेकी सब किछि ठीक अछि काइंडली रीजॉइन जो मनकर विजिबल होनी आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली रीजॉइन ओके शुभेंदु तुमको ना देखा जाउछि स्क्रीन टा okay your friends are guiding you they're instructing you how to go about let me continue and mate pore jana whether रश्मिता तमे देखि परछो कि ओके वेरी गुड देन शुभेंदु भी ट्राई करूचंती सी भी आई थिंक तांको तरफ किछि गोटे इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज हेछि सी भी देखिबा माने देखि परिबा उचित सो लेट मी कंटिन्यू आई विल रिपीट इफ रिक्वायर्ड फॉर अदर्स ओके तो ठीक अछि तो मु जोटा कहिथिले आपन को अगेन एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नॉट द ओनली क्रक्स ऑफ द स्टोरी though we are always highlighting French Revolution and Industrial Revolution because it is the nearest revolution after which we actually see
sociology as a subject emerging, but the story is way beyond that. ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟ୍ସଟା ଆଣିଛି, ଇଭେନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ସ ଆଣିଛି, ଅକ୍ଷତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ସ ଆଣିଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି, ଦିସ୍ ଲୁକ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେସିକାଲି କୋଉ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିବେ। So this is basically modernity and social change in Europe and emergence of sociology से एटा को mention करचंती unit 1 रो एटा को काहे कि से mention करचंती, because modernity माने नुहे जे खाली माने TV channels and तमर electronic gadget पळे आसला तो modernity, no, modernity means जेतेबेले गोटे orthodox की गोटे very overly traditional stereotypical जिंस society रे चली ची जहा को कि आपण केबे क्वेश्चन करू नाहंती, जे जोटा जहा आपण को गुरुजन बुझौचंती कि जे आपण को बुझौची कि आपण को प्रीस्ट जहा कहि देला कि बैप्टिस्ट जहा कहि देला आपण सेतरे यस रे यस जो मिलुचंती, दैट इज व्हाट इज वेरी ऑर्थोडॉक्स रूल जे नाही सीए प्रीस्ट तो आमे तांको कथा मानिबु, सीए होचंती गुरुजन तो आमे तांको कथा मानिबु, भूल हेले भी इट इज ओके, वी नेवर क्वेश्चन एट इट। But revolution starts when you ask question about certain thing जे एटा काहे की हैला, जदि एटा 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 मु काहे की करिबी, why will I accept this when it is not, it doesn't look to be right हैला, किंबा कौन सी जिंस जो एटा होची जो हमर कमर्शियल आपण सॉरी एटा बहुत बड़ होई जोची, वेट वेट अ सेकंड, yes ଆମର କମର୍शियल एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन होची सेही फेज जो फेज रे कि जो रोमन माने कल्चर जोड़ा चलथिला, वेरी ओल्ड स्कूल ऑफ कल्चर, जो मोर आपको पूरा लेमैन पर्सपेक्टिव रे बुझोची, बहुत ओल्ड मेथड्स जोड़ा चलीथिला बैप्टिस्ट मानकर, आई मीन चर्चमेन्स मानकर, जे सी जहा कहउथले सेटा ही सत, सीए ही सब ठीक कहउचंती, एटा जो चलीथिला, देयर वर सम इंटेलेक्चुअल पीपल बोर्न, से माने आस्ते आस्ते से भूल गुड़ा को मार्क करबा आरंभ कले, जेमति कि बैप्टिस्ट कहउथले बेसी दूर चली कि जीवनी, बेसी दूर चली कि गले पड़ी जीवो, काहे कि ना अर्थ इज फ्लैट, सेही जिंसोटा when the scientists came and they got to know जे earth is not flat at all, earth टा होची गोटे semi oval kind of shape रो गोटे planet, and it also doesn't माने earth रो around रे sun revolve करेनी, sun जो earth sun रो around रे revolve करे, these are certain small things जोटा कि आस्ते आस्ते कौन हैला ना हमरो साइंटिस्ट माने इंटेलेक्चुअल्स माने से माने जानिबा आरंभ करले हैला। देन ए जो नेविगेशन आसिला, एस्ट्रोनॉमी आसिला, देन केमिस्ट्री आसिला, मेडिसिन आसिला, तो एगुडा होची लिटरेचर माने लिटरेचर आर्ट एंड लिटरेचर माने होची माने आर्ट एंड लिटरेचर होची यू स्टार्ट also questioning critically and analyzing the cultural values, the cultural quotient of a particular societal norms that was always been conducted, okay। तो दिस इज आमे सेति पय कोन ना आम पय कमर्शियल आ साइंटिफिक रिवोल्यूशन केमति भाबरे हैला ता स्ट्रैंड ता बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट हे जाय, जोटा कि आई थिंक नेहा, yes, नेहा भोसले हैज आल्सो मेंशन्ड इट, ओके। देन कम्स एटा होची एटा गोटे स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग जोटा कि आपण फॉलो करि परिबे, सो दैट आपण बहुत क्रिस्टल क्लियर रहिबे आपणकर केमति भाबरे जिबार अछि। देन एई जगह रे कोन ना जो पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट हमें कहू छु, पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट जस्ट ओनली डजंट ट्रेस जे हां फ्रेंच रिवोल्यूशन हैला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैला, तापरे एनलाइटमेंट आसला, नो, एनलाइटमेंट got started, the strand of the fog of enlightenment got started from very 14th century itself, 14th and 18th century, under 14th and 18th century bhitare se period ta already start heitla। enlightenment means what, getting awakened to a certain situation, getting awakened to something that is going wrong or right, understanding what is correct, what is not correct, what has to be said yes, what has to be said no, एटा जब आपण बुझी पाउचंदी जे अन्याय कोटा न्याय कोटा, this means what, हाँ ठीक भूल अन्याय ना, हाँ, when opposites come
any opposites comes, opposite आपण को मुंडे opposite work करूची माने yes no correct not correct ता माने कोन you have started to analyze thing. आपण गोटे आपण को भीतर गोटे awakening होउची, आपण को भीतर गोटे awareness develop करूची बोली you are starting to analyze thing for which reason आपणकर सेटाई होची आपण कहूछु आमे जो कहूछु enlightenment means awakening. So this is the period how from 14th से जिनसोटा develop करला and 18th century along with आमे देखुछु. So this is how you see he has made the notes. Okay, then ଆମର फ्रेंच रिवोल्यूशन रे कौन कौन एक्जाक्टली आमे देखुछु से जिनसोडा से मेंशन करचंती पॉलिटिकल मॉडर्निटी विषय कहिचंती से एठी इकोनॉमिक माने से सेग्रीगेशन बढ़िया भाबरे कर देचंती जे माने जो फ्रेंच रिवोल्यूशन बेले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन रे कौन कौन आमे एक्चुअली को क्वेश्चन रे आमे डिफरेंसेस देखिया को पाउछु से जिनसोडा से ब्यूटीफुली एठी हाइलाइट करचंती. He has also highlighted, see, certain important revolutionists and certain important, Catholic churchmen. सेमान को भी से highlight करचंदी सही time रे जो माने dominatedly थिले. So this is finally जेतोले हमरो माने आपण समस्त join करी जिबे. I think we will be having our own groups also. मु से एठी भी आपण को एई सब notes गुडा को share करबी so that it will help you to build your own notes. Okay, but before that I will teach you properly जिनसो को भल से पढ़ी ले आपण माने notes जेतरे निजे बनेबे कोन से confusion हबनी. This is again the scientific revolution. या खुशी सेमती बहुत बढ़िया भाबरे देखंतु केमती भाबरे से notes separately सब किछि की लेखि की कोन कोन exactly changes हेतले सेडा को से mention करचंती हला. I hope everybody is seeing the answer paper, I mean the notes of this particular individual. This is the example I'm showing. एत्ते किछि से ऊपरु industrial, I mean scientific or commercial revolution को बुझेइले, intellectual development in France केमती भाबरे हैला सेटा को से देखैले दर्शैले माने सेटा को से understand करके लेखिले. Finally he is coming down to now industrial revolution and then of course will come around your French revolution. Okay, आपण देखंतु एई या परे परे आसुची आपनको according to हमरो syllabus जहा भी proper tip to toe जोटा mentioned है कि अच्छी. Okay, आज मु किछि बेसी ओवरडू करिया को चाहेनी because I have already given you a lot of briefing. Briefing work has been done constantly. तो मु एना चाहि भी आपनकर किछि questions नबाकू आउ questions ता होछि basically for improvements and हमरो केमती भाबरे आपनको सजेशन कोन आपनकर कोन रिक्वायरमेंट जे कोर्स ता आपन केमती भाबरे जीवा को देखिया को चाहउछन्ती because now we will be taking a 3-4 days gap. तापरे we will start because I will take some time to design the course completely. आमे जोटा आमे आरंभ करिबा, your notes and everything will be sorted. तो मते ना आपण suggestions दियंतु आपनकर जे how do you want to look after your optional paper. या भितर को माने एकदम नुआ माने करी first attempt को मानकर को माने already second attempt को दोउच and we should understand what are the loopholes so that we can correct those things. Don't get scared of me. Easily come up and say whatever issues you have. Yes, we will definitely mention about study materials. हमें start कर ले हमें कही भी अपन को पूरा basic level भी कही भी and ये देखो CN शंकर राव एगुड़ा हमें जाना कथा किंतु केमती भाबरे पढ़िबो is it is important हैला कारण सब जिंस जेमती हम को आंसर राइटिंग पाइन when you are writing formulating answer suppose sanskritization suppose modernization पढुची कि आपनकर कौन सी मैरिज ऊपर क्वेश्चन पढुची फैमिली ऊपर क्वेश्चन पढुची CN शंकर राव हमरो वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स जोटा कि आपण फॉलो करि परिबे कारण टू द पॉइंट बहुत बुलेट पॉइंट्स अछि
ଆପଣ pointical way रे ଆପଣ पूरा पूरी पाई जिबे तो it's a very good book when it comes to note making और note presentation हैला तो सीएन संकर works well आपन को आउ टिके जदी ब्यूटीफाई करिबार अछि आंसर आउ टिके यू नो सिविल सर्विस स्टाइल रे आउ टिके बुझिबार अछि देन नितिन सांगवान is a must have. Okay, so these two books are very important. Okay, ता बाद रे you will have foreign authors like Harlambas and all kuhanti, but it is completely your choice, but we will make it to the best possible because I will be also making notes all together. तो मु आपन को anyways provide करिबी तो ता बाद रे आपन को सेल्फ स्टडी पे I think these two are the best. And yes, आपन को फंडामेंटल क्लियरेंस फर्दर करिया पई आपण चाहिले हमर ई ज्ञान कोर्स हमर जो इग्नू मटेरियल्स जोड़ा स्पेशली इग्नू रो एमए एंड बीए स्पेशली मुके भी बीए लेवल आपण को ए सिलेबस हिसाब रे बैचलर्स लेवल टा आई थिंक बेसी बेसी भलो हुए तो यू कैन गो फॉर इग्नू मटेरियल्स एज वेल. These three materials can help you sort your business. Okay. Yes. One likely Smriti Shri. Thank you, ma'am, for this question. I am new to this subject, but I am interested to read. So, how can I do to touch the subject fully? What can I do to touch? Okay. जोटा मु कहली आपनकर you can start with if you want हमरो ये जो सीएन शंकर राव जोटा मु कहली सीएन शंकर इवन नितिन सांगवान भी आपण नै आसंतु सेतिरे कोन ना आपण को माने टोटल जहां भी आपण को रिक्वायरमेंट फंडामेंटल क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस भलो ही दिया हेची किंतु ओनली नोट्स विल नॉट आई मीन बुक्स विल नॉट हेल्प यू से बुक्स भी आपन को जानिया को हबो कोनटा केति को आपन को दरकार लिखिया को टू प्रेजेंट इन योर पेपर्स एंड कोनटा यू डोंट हैव टू प्रेजेंट इन योर पेपर्स फॉर दैट you have to basically follow I mean get a guidance माने हमें जब lecture रे पढ़ी वाला बेले हमें से गुड़ा कोई touch करिवा which is very important because sociology itself is a vast subject not everything is required for your you know exam writing तो से हिसाब रे हमें करिवा. Yes, no issues with the new members. Lakshmi Priya is completely new. Yes, don't get scared at all. Don't get worried. You will be handled well enough. Okay. So, kichi chinta hebar nahi. But yes, my suggestion if you want a book material, so these two books I will recommend for now. Pushpitarani, if I'm not pronouncing it wrong. Yeah, I am new according to important chapters. Complete first, then other chapters. Very good. That is what I was also saying you right now. That no doubt we will complete the entire whole syllabus we will be completing. But it is also, it becomes very important for us to first cover the units which are of utmost importance. Okay. Every unit has its own speciality. You cannot say je aji ei unit ru pocket na to kintu chota mu apna कहली अन्य यूनिट रु जदि आमे देखुछु किछिटा यूनिट अछि गोटे पढुछि आउ किछिटा यूनिट अछि जोतरे कि 4-5 एमथि पढुछि. So for which reason certain units becomes overly important where we very well know that anyways from this particular portion we are getting 4-5 questions. Assured questions have to be first dealt with. We like marriage is 101% question. Marriage unit to padibo marriage ho, family ho, social control. Then jo amaro classical thinkers. These are the most important question. Then ame dekhilu very easily padila question from your research paper. Research means which I'm saying your 2 and 3. Hello, Jyoti, I'm a research technique, how to collect data. So data collection, what is observation, what is hypothesis, what is participant observation, then theorist manipulation. So we need to also understand na, I'm a question paper or syllabus को understand करिले ही तो हमें बुझिबु जे जे ए paper ए unit से why are we taking time to complete and other units we are completing in a bullet pointicles जोड़ा कि जेतिको important सही वे रे. Okay. Any other questions?
how sociology help you in essay paper. Essay paper means as if you're saying like your GS papers where you're supposed to write essays like mane jo tu ye padigala terrorism and all, globalization and all, एमती कोई long question, long essays लिखिया को पड़े सेटा आपण कहउचंती जितेंद्र परिडा I believe. टिके आपण क्वेश्चन टा को टिके जदी क्लैरिफाई करिवे. I think Jitendra is kind of typing or something. Let him clear this question, then I will answer to this. Oh, yes, ma'am, se likhi chi if I'm not wrong. Okay, sorry. I just missed it out. Yes. तो आपनकर जदी हाँ ऑफ कोर्स आपनकर जीएस रे जो क्वेश्चंस गुडा पढ़े सोशियोलॉजी तो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी ता गोटे होलिस्टिक सब्जेक्ट आपण डील ही करछोंती सोसाइटी सहित तो सोशियोलॉजी पढ़ला बेले यू आर आल्सो गेटिंग अवेकेंड अबाउट दी ऑल दी सोसाइटी आमे त देखंतु आपण तळे पढुचंती प्रॉब्लम आपण सपोज पढ़ले क्रिमिनोलॉजी ऊपर किछि पढ़ले आपण डेविएंस ऊपर पढ़ले सपोज ताल थ्योरी ऑफ डेविएंस तापरे आपण सपोज पढ़ले मैरिज रो जेतबे गला फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स इन लाइक फैमिली रे जो हमें देखु जो कोन इंपैक्ट करूची फैमिली सिस्टम को हमर बिकॉज़ इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो सेते बळे आपण कोन आपण ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड जे केमती भाबरे इट अफेक्ट करूची ता माने यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग द करंट सिनेरियो ऑफ द पर्टिकुलर लोकालिटी माने हम इंडिया रो हमर पर्टिकुलर माने हमें कोन होउची असुविधा सुविधा होउची व्हाट इज द चेंजेस इन द सोसाइटी we have to be aware of it, and when you are aware of it then only you can understand what are the factors or what are the problems जो bengi juvenile delinquency hochi, what are the problems that is affecting family life disturb hele, what is the problem, what are the chaoses that we are seeing. So of course sociology, when you study your optional paper, you take your optional paper as sociology, I'm especially saying automatically एथिरे आपण कोन ना essay writing रे आपणकर थॉट बहुत डेवलप करी जाए, आपणकर एग्जांपल्स आपणकर आइडियाज बहुत डेवलप करी जाए, आपणकर मैच्योरिटी इन राइटिंग डेवलप करी जाए कारण यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर अरीना ऑफ योर योर स्फीयर एंड योर एटमॉस्फेयर. तबे एते भलो भाबरे सेटा को ऑब्जर्व करछो एंड अंडरस्टैंड करछो जोथि पय कि एटा तुम एसे रे ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट करिवो बिकॉज़ एसेटा कोन एसेटा होउची ता भीतर जो सब्सटेंस तो हम लिखुछो सब्सटेंस रिलेट टू your something, some factor or some impact or something in that is happening where not in the universe but in your planet, that is what is happening in India or what is happening in your in and around of your state etai hochi. So of course undoubtedly sociology will always help you for your essay writings. I will try to even get some question papers, I mean some questions that we will build which will relate to you know amar आजिकल का current scenario of the society को relate करिवो so that माने हम जोटा कहली मु day 1 रे जोटा कहितली किछिटा हमें माने high level preparation करिबा which is above what questions are coming आउ किछिटा हमें normal level करिबा so that दीटा level आपण जदी माने practice कर नै थिबे of course whatever level comes you will be able to handle the questions. Kuldeep कौन लिखिचंती? In my opinion, ma'am, you kindly continue to elaborate each concept in a simple language as you are doing now, and then if that will add it up, we think. Of course, 101% Kuldeep, I do agree with your statement because मु सेइथि पई ही एना जाके sociological terminologies मु एना जाके आनी भी नहीं मुझे बिकॉज मुझे जानी हठात कि आमर जोटा जो जिनसटा आपण हुए तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज रे जोटा हमें जो सपोज कौन सी गोटे टर्म हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज जोटा बुझौछु व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी इट इज क्वाइट अ डिफरेंट. तो सेइथि पई मु एना जाके आपण को फुल्ली डाइव इन करे नाही बिकॉज डाइव इन मु करे भी व्हेन फाइनली वी स्टार्ट आवर कोर्स दैट इज या पर जो क्लास टा हबो आपणकर we will start it from your complete unit 1 हमें पूरा पूरी भलो से स्टार्ट करिवु
with a thorough and of course ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସବୁଠୁ nominal example ଦେବି because I know ଏଇ paper ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା କାହାର honest paper ନୁହଁ, କିଛି ଜଣଙ୍କର honest ଥିବ well and good, majority are not from sociology background. So my priority will be like as if ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ +2 ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ +2 ରେ introduce କରଉଛି ଯେ sociology is a subject କଣ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଜିନିଷଟା ସହଜ ହବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢି ପାରିବା। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି କଲି। You should everybody should be now mentally ready for a roller coaster ride with me, with the journey of sociology. And jota mu kahili, when I teach caste or when I am talking about any religion, jemti ame initially na western religion upare ame amar kichita questions uthibo, ଆମ churchman ଉପରେ question ଉଠିବ। So irrespective of what religion, what gender, what caste you people belong to, it doesn't matter. Please keep all of these emotions out of the lecture. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି sociology ରେ, my advice will be don't take anything to your heart because we will be postmorteming the reality of society. So ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କେହି ବି ମୁଁ ଏଟା ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ has to be the ego ମୁଁ has to be, I has to be kept outside. We will be observing from the eyes of a sociologist. Okay, যদি ଆପଣ entire subject କୁ as a sociologist ହିସାବରେ observe କରିବେ, things will become very easy and ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ there won't be any point of argument or disturbance. Okay, yes. So today I'm giving you a very yes ma'am, almost we all are giving our first attempt, but it is becoming easy. So all thanks to you. Oh my God, it's a very Subhendu. Okay, it's a very good. I mean, very. I'm honored that with only two simple classes, 2 to 3 simple classes, you guys have got really faith in me, and I will try my level best to carry it forward properly. तो ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଏ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯୋଉଟା ମେନସନ କଲେ, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଡୁଇଂ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ, ମତେ କହିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ କହିଲେ, କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଓକେ, so that's all for this class today. So this was my end of giving you an overview, giving you a demonstration of ये ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ I believe holistically ବୁଝେଇ ପାରିଛି ଯେ question paper କେମିତି ପଡୁଛି, number 1 which was my priority, number 2 ଆପଣଙ୍କୁ properly overview ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦିଟା ଯାକ यूनिट आई मीन दिटा जाक पेपर रो कौन कौन पड़ुची। आज आम एग्जाम प्लेट भी कले जे को भाव यूनिट गुड़ा डोमिनेटेडली पड़ुची, को यूनिट गुड़ा डोमिनेटेड पड़ुची, हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज। ओके, एंड आपणकर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मु आपनको देखैली हाउ टू मेक योर नोट्स, हाउ टू फॉर्मुलेट योर नोट्स, आ को भाव इवन मु देखैली दृष्टि जेमती वन ऑफ द टॉपर्स कर नोट्स भी देखैली को भाव से आंसर एक्चुअली रे आंसर पेपर रे से प्रेजेंट करूचंती। आमे आगु को आहुरी भी वी विल बी सॉल्विंग थिंग्स, बट फॉर द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट आपण न्यू कमर हिसाब रे फॉर ओसीएस लेवल आपनको आई रियली बिलीव जे मु आपनको जस्टिस देई परची टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, केमती एंटायर सेशन एंटायर कोर्स केमती आमे आमे वर्कआउट करिवु, कौन कौन को भाव क्रिटिकली एनालाइज करिवु। आपनको मु एटा भी बतै देली जे हाउ टू एनालाइज योर ओन थिंग्स so that आपण you can apply these kind of critical analysis to other papers as well, आपनकर जहाँ भी subjects I mean GS and all papers will be. So your analysis before entering to the subject, your syllabus has to be by hearted, and most importantly what are the important units सही हिसाब से। अच्छा, Lakshmi Priya Prushti, yes of course I am using simple words, I will be also using simple words further. Yes, thank you for your feedback. So ame aji pai etiko. Okay, I hope you have no other questions. Jodi au kichi question achandi mate kindly pacharantu, otherwise that's all for today from my side. Okay.
मैम जो गोटे गोटे बड़ पॉइंट तले जो सब पॉइंट्स गुड़ाक अच्छी माने सिलेबस रे जो सब पॉइंट गुड़ाक जदि आम सर्ट नोट्स हिसाब से बनइबा तो फॉर एग्जांपल गोटे बड़ लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे पड़ला आमे ताको सब पॉइंट को शॉर्ट नोट्स हिसाब से बनई चंती तो ताको केमती साइज करके लिखले सेटा माने बेटर हबा माने बड़ बड़ पॉइंट माने तुम कहूछ फॉर एग्जांपल मु देखि गोटे मिनिट फॉर एग्जांपल तमे एठी आपण जेमति एटा एकटू कहउचंती आपणकर बड़ पॉइंट माने कोन कहउचंती जेमति कि गोटे एग्जांपल दियंतु माने आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक जदि क्वेश्चन पड़ला जे वन डाटा कलेक्शन ऊपर कि जोटे क्वेश्चन पड़ी गला डेटा कलेक्शन तो तारो जो यस सब मैम पॉइंट्स सही टाइप रो क्वेश्चन है मैं सपोज इफ दे विल यस मैम आस्क अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कलेक्शन एंड ये हाँ आपण देखंतु आपण को जदि पर्सनली से पचारिबे ऑब्जर्वेशन ऊपर कि इंटरव्यू ऊपर एटा जेतेबेले हमें पढुबु सेतेबेले आपण जिंसटा बेसी भलरे बुझी परिबे तो जेतेबेले हमें मन ऑलवेज मन रखिबे व्हेन इट कम्स टू योर स्पेसिफिकेशन किछि पचारछि माने सपोज जोटा पचारला हाइपोथेसिस ऊपर पचारछि व्हाट इज हाइपोथेसिस आ गोटे कोन क्वेश्चन तर एलोंगेटेड क्वेश्चन थिला तो सेतेबेले हाइपोथेसिस इटसेल्फ इज अ बिग कांसेप्ट तो आपण यू विल फोकस ऑन हाइपोथेसिस इन द हाइपोथेसिस अंडर रे पुनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस अछि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एमती सब अछि तो एगुड़ा सब बोलला बेलको आपण हाइपोथेसिस को फोकस कर एलाबोरेट करछथि फॉर एग्जांपल जेमति म कहली जेमति डेटा है ना हमरो डेटा कलेक्शन की डेटा टेक्निक किबा कुछ के टेक्निक ऊपर पचरा हला कि डेटा कलेक्शन ऊपर पचरा हला you will simply write there are two you know there are types of data collections अपन छोटो छोटो के कहबे जे क्वांटिटेटिव रे we find these kind of data collection qualitative रे we find these type of data collection sociology is a belongs to जो हमर sociology जो कौन सेटा कहंती probability sampling non-probability sampling अच्छी of data collection तो हमारा sociology is basically quantitative dominated I mean qualitative dominated तो सेटा रे आपण सबरो bite points लिखिबे you basically have to give an overview जेमति मु आपण को overview दिली syllabus रो सेमति आपण एई टाइप रो जदी गोटे entire unit रो holistic question पढुची ताले जोटा कि मु देखिची आपनकर OPSC especially doesn't prefer giving you holistic question like that OPSC आपण को माने बाइट क्वेश्चन सी दोची जदी आपण कहउचंती सेमति पढिला देन यू हैव टू बेसिकली मो आपण को पढिबे आपण निजे बुझि जिवे यू हैव टू गिव बेसिकली व्हाट इज data collection means you are collecting data and you are taking certain kind of sample to analyze a certain kind of situation in order to validate your point हला एटा आपण लिखिले देन आपण तळे लिखिबे what are the types of data collections used in quantitative the types of data collection used in qualitative and you summarize the point that's it बाइट yes ma'am माने सिंपल बाइट्स रे आपण लिखिबे मु आपण को देखि देबे जो क्वेश्चन ता आपण कहले एटा एठी मु एते एलाबोरेट एति पय कहलेनी कारण आपण इने जाके भितरे पसी नांती डेटा एनालिसिस कोन डेटा टेक्निक कोन तो आपण हठात न बुझी पारंती तो माने बेकार मु चाहिने आपण को टेंशन क्रिएट करिया पय जगह रे सेति पय मु आपण को ओवर एलाबोरेट करनी बट दिस इज हाउ इट हैपेंस you will not elaborate the main points interview is also kind of a data collection apanଙ୍କର interview observation is also kind of a data collection तो observation अच्छी questionnaire is a kind of data collection now जदि आपनको जदि ना questionnaire विषय रे गोटे full length question पड़थिला questionnaire ऊपर तो there you have to elaborate questionnaire ता काहा को दिया जाए questionnaires are normally given to people those who are literate जो माने लेखि पढ़ी जानि चंती से मानन को questionnaire दिया जाए now आपनको जो suppose गोटे example गोटे question आपनको पढ़िला जे you are to you have to collect data and understand no you are to understand the job satisfaction of laborers blue collar laborers who are the blue collar laborers now the blue collar laborers are basically हमर राजा मिस्त्री माने जो माने हमर ये जो हमर कंस्ट्रक्टर भाई माने ए माने होचो ब्लू कलर लेबर्स दे डोंट हैव अ स्टेबल इनकम ओके तो एटा जदि आपण करबा जो माने राजमिस्त्री मेजरली इवन नॉट राजमिस्त्री जो माने मिस्त्री जो माने एमती टिपिकल लेबरर्स माइनर्स लेबरर्स जो माने अछंती से माने कोन से माने टिप चिन्ह वाला दे आर नॉट लिटरेट इनफ they are not educated enough to fill up your questionnaire to understand the language of the questionnaire तो सेते बेले आपण कोन करिवे सेते बेले you basically
মানে you have to see this questionnaire ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି type of data collection ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କୋଉଠି apply କରିପାରିବେ now if you are going for ସେଇ ଯୋଉ ଆମର laborer section ଆପଣ କଣ use କରିପାରିବେ you can opt for interview କଲେ ଆପଣ rather କାହିଁକି ନା interview ରେ you are basically you are noting down the interviewee's responses but when it comes to questionnaire you are giving the paper or you are mailing down to everybody and semane apanku nijara typing re now questionnaire again you find open close ended questions and open ended questions so questionnaire ko typically etala apanku elaborate kariya hoji you have to elaborate what are questionnaire ta kono kahaku questionnaire ame sadharanato mane etala ame response collect करू कि डेटा कलेक्ट करू सैंपल कलेक्ट करू आमे साधारण कहा कहा को आमे एक्चुअली इटा बांटिबा उचित आपण यारे आपण जदी एग्जांपल लिखि देले फॉर एग्जांपल आमे लेबरर्स मानको क्वेश्चनर रखि फर्स्ट इट इज अ बिग जीरो एंड अ बिग क्रॉस व्हाई because laborers are generally the masses illiterate they cannot fill up the questionnaire so if you rather write now we are collecting the stress management data from basically teachers Sethi you can apply questionnaire. Kahinki na apana said the masses educated they can fill the question by them. Now questionnaire ta apana quantitative re use karanti na qualitative re use karanti. तो सेही पे मु आपन को इथे ओवर एक्सप्लेन करनी कारण एठी आपण एई भाबरे जदी बुझिबे you will get messed up. So एई सेम क्वेश्चनर एते किछि लिखिबार अछि किंतु एई सेम क्वेश्चनर जदी आपन को आसी जिवो डेटा कलेक्शन रो एज अ होल रे आसीबो क्वेश्चन say jagare you will basically write questionnaire is a set of questions where you overview करियार अछि हाँ बुझि परले तो काहार brief काहार length so depending on the question we will all discuss while we study आपन को सब questions will be discussed well enough आपन को even जदी किछि किछि questions मुंडरे आसुची निजे formulate आपन करछन किछिटा question because it is very good habit if you formulate your own questions निजे ही question तयारी करी कि निजे ही ये कारण आमे बेले बेले बहुत odd questions भाबी दो बहुत अखड़ुआ question भाबी दो जार कि आंसर करबा quite a difficult so it is very good that you do it you do those write those questions so that mane sometime you can also mane we can also discuss one fine day we'll keep for these kind of sessions so that you can ask your questions and ame easily ame doubt clear kari pariba okay I hope this is fine with everybody thank you ma'am okay fine and so I believe we should leave now good night everybody okay yes okay swagatika okay bye